Hello students, we have started our lesson that is reproduction in lower and higher plants और उस लेसन में हमने लास्ट लेक्चर में डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जहाँ पे मैंने ये पूरे पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब करके बताए थे एज फार एज योर थियोरेटिकल क्वेश्चन इज कंसर्न तो शॉर्ट नोट इस पे पूछा जा सकता है अगेन these diagrams I have already explained you that these diagrams are very important for in the development of male gametophyte. Now today we are going to discuss this part which is the structure of anatropous ovule. So before going to that part जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ये भी पूरा एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ बहुत सारे कलरफुल इमेजेस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू what is gynoecium, what is a carpel. Now this is a carpel, right, which contains stigma, style and ovary. So these three parts which are very important parts which prepare or which make the megasporophyll or which is the carpel, which is the gynoecium. So we have studied the difference between the apocarpous flower and the syncarpous flower. So I have explain the apocarpus, the difference between the apocarpus and syncarpus flower with the help of different diagrams of the flower, and again I have explained the differentiating points between them. Actually आपको 11th standard में हो चुका है, so you can just go through your that lesson of your 11th standard. We have studied this part, that is uni-ovulate and multi-ovulate type of ovaries, right? So that again I have explained you. So the structure of, as far as the structure of anatropous ovule is concerned, so this part up till this anatropous ovule, तो ये डिस्क्रिप्टिव जितना भी ये दो पैराग्राफ है ये और ये डायग्राम ये आज हम स्टडी करने वाले हैं. This seems to be very small section but it is very important as far as your exam is concerned, exam point of view. This part is very स्कोरिंग. ओके, सो इसमें एक शॉर्ट आंसर जो है शॉर्ट नोट वो पूछा जा सकता है जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स है वो आपको लिखने पड़ेंगे. ओके, तो पॉइंट वाइज जो डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी इस पे आपको पूछा जा सकता है. अनदर थिंग इज यू कैन गेट जस्ट द क्वेश्चन ऑन एनाट्रोपस ओव्यूल. सो sketch label well labeled diagram of anatropous ovule, तो ये भी एक अलग से आपको डायग्राम पूछा जा सकता है फॉर 2 मार्क्स. और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की अगर बात करें तो डायग्राम एंड द डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स कैन बी आस्क्ड. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो पार्ट है यही आज हम पढ़ेंगे. ये जो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट है दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. सो उसके पार्ट में जितना भी डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. ओके, सो आई हैव अ ब्यूटीफुल एनिमेशन फॉर यू. सो उस एनिमेशन के साथ वी विल go inside the anatropous ovule. We will see what is placenta, what is anatropous ovule, what is hilum, what are integraments, what is nucellus, what are the micropylar and chalazzal end. Both the ends we will try to understand with the colorful beautiful diagrams as well as with the animation. So before going to that, let's try to understand this diagram now. Can you observe this? This is called as Chalazza. Okay, these are known as antipodals. This is the middle part, you can see this is the secondary nucleus, and this green colored whole oval shaped part, this called as embryo sac. Okay, sac, the sac which carries the embryo, and these are the cells. You can just observe the difference between these antipodal cells and these are known as synergids, right? This is known as synergid and the middle layer is called as egg. So you can understand the difference between these 1, 2 and 3. You can observe the whatever dots they are present or whatever dots they are situated in these 3 cells, right? ये है तीनों भी जो cells है ये same है. So these are known as antipodals, while these two they are known as synergids and this middle cell is known as egg. Okay, this is the outer integument, this is inner integument, this is nucellus which provides nourishment. We will see the function of each and every part of this, and this small opening is called as micropyle. This
part is known as funicle. जो आपको स्टॉक की तरह दिख रहा है, that part is known as funicle. While इन दोनों को जो जोड़ता है, that is known as hilum. Okay, and this part is called as placenta. So ये जितना भी पार्ट है यही यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. So each ovule it develops inside the ovary and is attached to the placenta by a small stalk that is called as funiculus. So now this part is called as funiculus, or this is known as funicle. So let's try to understand this, okay, with the markings. तो अगर आप डायग्राम निकाल रहे हो तो डायग्राम का प्रैक्टिस करो. जब आप डायग्राम को याद करते हो तो डायग्राम को याद करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस डायग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन दोनों याद करें. ओके, तो ये बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्शन भी है तो वो भी आपको याद हो जाता है, और डायग्राम जब आप निकालते हो तो डायग्राम भी आप भूलते नहीं हो. वेन एवर यू ड्रॉ द डायग्राम यू डोंट मिस द पार्ट्स. ओके, तो वो भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग उसमें नहीं होता, तो आपके मार्क्स नहीं जाते उसमें. सो दिस इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल. अनदर पार्ट इज the place of attachment of the funiculus with the main body of the ovule is called as hilum. So where is the hilum? The place of attachment. Funicle जहाँ पे main body of ovule को attach होता है. So can you observe that this point जहाँ पे ये ovule यहाँ पे इस stalk like structure या funicle को attach हो जाता है, so that part is called as hilum. So ये है funicle, जो हमने बताया ये stalk है और ये प्लासेंटा को अटैच करता है इस एनाट्रोपिस ओव्यूल को. ओके, हाइलम ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन दिस एनाट्रोपिस ओव्यूल एंड दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल. तो इन दोनों को ये जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइलम. सो इट विल बी योर सेकेंड पॉइंट. अगर आप इस तरह से इसको याद रखोगे तो ये डायग्राम भी याद हो जाएगा, एज वेल एज यू विल remember the points also. Okay, descriptive points also, so you can describe the diagram too. So in the angiospermic plants, the most common type of ovule is known as anatropous, in which micropyle is directed downwards and is present adjacent to the funiculus or funicle. तो यहाँ पे आप देख सकते हो it is downward in direction. So यहाँ पे ये बात करते हैं हम ऐसी वाली, जो इस डायग्राम का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इट इज़ नॉट स्ट्रेट, राइट, सो इट इज़ डाउनवर्ड. सो ये जो पार्ट है इसकी हम बात कर रहे हैं. सो दिस इज द डाउनवर्ड डायरेक्टेड पार्ट जिसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल. सो ये इस तरह से इसका डायरेक्शन है. सो इट इज जस्ट मूविंग डाउन. ओके, सो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल. तो यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड की हम बात कर रहे हैं. माइक्रोपाइलर एंड कहाँ पे है? माइक्रोपाइलर एंड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. सो सच टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल. सो ये बहुत जरूरी है. Another thing is the ovule consists of central parenchymatous tissue, the nucellus which is surrounded usually by two protective coverings which are called as integuments. तो ये integuments, यहाँ पे हम दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं एक साथ. एक है parenchymatous tissue. parenchymatous tissue कहाँ पे present है? The ovule. So ovule it contains this parenchymatous tissue which is present in the center of the ovule. So let's try to understand this with the help of this diagram now, where the nucellus is present. Okay, so now this part is called as nucellus. Can you observe that? Now this part is called as nucellus. Nucellus कहाँ पे present है? It is present inside these integuments. Now what are integuments? Integuments, these are the two layers. Can you observe that? Right, in this diagram. Now this is the outer integument. Outer means which is present the outer side of this part, ovule. Okay, so there are two integuments. One is outer integument and another is inner integument. Where is the inner integument situated? Inner integument is situated just beneath this outer one. Okay, so there are two layers. और इन इंटेग्यूमेंट्स को हम साथ ही साथ जोड़ रहे हैं विद दिस न्यूसिलस. न्यूसिलस के साथ क्यों जोड़ रहे हैं हम? बिकॉज न्यूसिलस क्या है? न्यूसिलस इज द टिश्यू, न्यूट्रिटिव टिश्यू, which provides the nourishment for the formation of megaspores. Okay, it forms
megaspores. That process is called as megasporogenesis. So for that it requires nutrition, and that nutrition it is provided by this nucellus, or which is known as the न्यूट्रिटिव टिश्यू. ओके, तो ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट. न्यूसिलस को कौन प्रोटेक्ट करता है? न्यूसिलस को प्रोवाइड करते हैं ये दो लेयर्स, एक है आउटर इंटीग्रेमेंट और दूसरा है इनर इंटीग्रेमेंट. ओके, सो होप आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूसिलस किस टिश्यू से बना है? इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज न्यूट्रिटिव इन नेचर. सो अनदर थिंग इज the narrow opening at the apex of the ovule is called as micropyle. So you can observe now this part is that smaller opening that is known as the micropylar end. तो ये आपको नहीं भूलना है. This is very easy, you know. आप प्लासेंटा को अटैच करते हो फ्यूनिकल को, प्लासेंटा उसके बाद आता है फ्यूनिकल, उसके बाद हाइलम है, राइट. उसके बाद आप न्यूट्रिटिव टिश्यू की बात करते हो, राइट, जिसको हम बोलते हैं न्यूसिलस, जो बना है पैरेन्काइमेटस सेल से. उसके बाद उसके ऊपर दो लेयर्स है जो उस न्यूसिलस को प्रोटेक्ट करते हैं. जो इनर पार्ट है उसको बोलते हैं इनर इंटीग्रेमेंट, जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं आउटर इंटीग्रेमेंट. सो इट इज़ वेरी इजी. अभी जो एनाट्रोपस ओव्यूल है जिसका हम एंड की बात कर रहे हैं, तो उसको दो एंड्स है. जो लोअर डाउनवर्ड पोर्शन है उसका जो इंटीग्रेमेंट या उसका जो पार्ट है, ओपनिंग है, उसको बोलते हैं हम माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर एंड. ओके, और ये चलाजा है. चलाजा इज द जस्ट अपोजिट टू माइक्रोपाइल. माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो. माइक्रो मीन्स स्मॉल ओपनिंग विच इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेमेंट्स का जितना भी स्पेस यहाँ पे दिख रहा है, इंटीग्रेमेंट्स इसको फुल्ली कवर नहीं कर रहे हैं, राइट. So that part is micropylar end. इसके opposite है chalazzal end. So chalaza is the base of ovule directly opposite to micropyle. Embryo sac or female gametophyte is oval. It is multicellular structure embedded in the nucellus. ये क्या है? Embryo sac. Now this green, whole green color part is called as embryo sac, जिसको बोला जाता है female gametophyte. So that female gametophyte is oval. It is multicellular. You can observe this shape. It looks like oval structure and it is multicellular structure. बहुत सारे सेल्स है इसमें. कौन से सेल्स है इसमें? एंटीपोडल सेल्स है. ये आपको याद रखना पड़ेगा. ए और सी इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो. एंटीपोडल सेल्स चलाजल एंड के पास आते हैं. सो ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस तरह से ए एन सी. तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, तो आप उसको मिस नहीं करोगे. और तीनों का एक सेम स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस भी सेम है, सेम शेप भी है. ओके, तो ये इस तरह से. मिडिल में एक सेल प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस. नाउ जो ये पार्ट है दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस. और यहाँ पे जो सेल्स हैं जो है माइक्रोपाइलर एंड के पास आते हैं. सो यहाँ पे है दो सेल्स जो उसके साइड्स में प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं सिनर्जिड्स. और जो मिडिल वाला पार्ट है उसको बोलते हैं, ये वाला जो है, दिस इज नोन एज एग. ओके, दिस इज नोन एज एग. तो ये है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. अभी जितना भी हमने स्टडी किया इस डायग्राम में, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो उसमें आपको जो डिफरेंट पार्ट्स है इसका डिस्क्रिप्टिव मोर देन 2-3 पॉइंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे. तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा लिखने के लिए, अगर आप थियोरेटिकल सेक्शन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो. तो एज फार एज दिस पार्ट इज कंसर्न, तो इतना इनफ है इस पार्ट को समझने के लिए. या ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप डायग्राम भी याद रखो, ताकि डायग्राम याद रखोगे तो आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे. आपको उस डायग्राम को सिर्फ डिस्क्राइब करना होता है. या फिर आप डिस्क्रिप्टिव जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं, नाउ यू ट्राई टू रिमेंबर द डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स. तो आप डिस्क्रिप्शन याद करते हो, कौन से एन के बाद कहाँ पे क्या है, कौन से सेल्स में कितने कितने न्यूक्लियस है, कौन सा सेल कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है एंड ऑल. तो ये अगर आप याद रखते हो तो आप उस तरह से डायग्राम आप याद कर सकते हो या ड्रॉ कर सकते हो. तो आपके दोनों क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, राइट. तो अभी अगला पार्ट आता है एक वीडियो का. तो यही हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल एनिमेशन. I will try to explain you this animation, which is a beautiful animation describing the structure of
female gametophyte and the development of female gametophyte. So here you are going to discuss about the development of ovule and the female gametophyte. तो अभी जो next part आने वाला है Megasporogenesis का, वो भी part थोड़ा सा इसमें दिखाया गया है, which is again very important. और ये जितना भी वीडियो है इसके थ्रू आपको बहुत सारे नोट्स भी आप निकाल सकते हो. ओके, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पॉइंट थोड़ा ज़्यादा करने हैं या नीट के लिए आपको प्रिपरेशन करना है तो वो भी आपको इसमें मिल जाएगा. सो लेट्स ट्राई टू, ये मैं प्ले करूंगी, उसके बाद आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द वीडियो. A female gametophyte. Development of ovule and female gametophyte. Ovule means small egg. In seed plants, the ovule is a structure that gives rise to and contains the female reproductive cells. तो ovule क्या है? Now see this part. This is stigma, this is style, and this is ovary. Okay, so ovules, they are present inside here, and this structure it gives rise to and it contains the female reproductive cells. Okay, so that part it contains the female reproductive cells. अभी हमने जो schematic diagram देखा या जो भी representation था उसको हम with the help of animation we are trying to discuss that part. Okay, Ovules, which are born into placenta in the ovary, develop into seeds after fertilization. तो after fertilization we have studied the structure of pollen grains. Pollen grains आके कहाँ पे गिरते हैं? वो गिरते हैं स्टिग्मा पे. ओके, फीमेल गैमेटोफाइट पे. कार्पेल का जो स्टिग्मा है उसके ऊपर आके मेल गैमेट्स या पोलन ग्रेन्स वहाँ पे आके गिरते हैं, तब जाके ट्यूब न्यूक्लियस फॉर्म होता है. राइट, ट्यूब सेल, यू हैव स्टडीड दैट इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द लेसन. उसके बाद वो जो मेल गैमेट्स है दे फर्टिलाइज द ओव्यूल्स. ओके, तो उसके बाद आफ्टर द फर्टिलाइजेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सीड्स. Let us learn the structure of the ovule and the development of female gametophyte. The ovules have a massive parenchymatous body called the nucellus. So we have studied this part. Do you remember that? Nucellus, it is present in between the two integuments, right? Outer integument and inner integument, if you remember that. Okay, तो यहाँ पे वही बताया है. Now see, this is the outer integument and this is inner integument, and this yellow color जो part है that part is called as nucellus. और ये किस cells से बना है? It is made up of massive parenchymatous cells or parenchymatous tissue which is nutritive in function. It functions as a megasporangium. The ovule is protected or enclosed by one or two protective sheaths known as integuments. The ovule with a single integument is known as unitegmic, and an ovule with two integuments is known as bitegmic. तो ये जो पार्ट है ये आपके नीट के लिए जरूरी है. ये आपके बोर्ड के बुक में दिया नहीं था. राइट, तो अगर सिंगल इंटेगमेंट है या अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो तो यहाँ पे सिंगल कवरिंग है. राइट, तो ये सिंगल कोटेड है तो इसको इस सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सिंगल इंटेगमेंट हैविंग ओव्यूल, और जिसको बोलते हैं यूनिटेगमिक. यूनि मीन्स वन. ओके, और दूसरा जो है दिस इज कॉल्ड एज द ओव्यूल विच कंटेन्स बाई मीन्स टू, मीन्स द ओव्यूल विच इज कवर्ड विद द टू इंटेगमेंट्स. ओके, The integuments completely cover the nucellus, leaving only a small opening at one end called micropyle. अभी इस डायग्राम को याद रखो. नाउ सी, दिस इज द फ्यूनिकल. यहाँ पे है हाइलम. राइट, यहाँ पे हाइलम आता है, और दिस पार्ट को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड. माइक्रोपाइलर एंड बिकॉज ये कैसा है? नाउ सी, ये ऐसा नीचे डाउनवर्ड, दैट ओव्यूल इज डाउनवर्ड. ओके, तो यहाँ पे जो एंडिंग पे जो पार्ट है जहाँ पे स्मॉल ओपनिंग है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, और इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड. ओके, The ovule is attached to the placenta by a stalk known as funicle, and the point of attachment of the body of the ovule to the funicle is called hilum. The basal part of the ovule, where the nucellus, integument and funicle merge, is known as Chalazza.
यहाँ पे क्या है, दिस इज नोन एज चलाजल एंड, दिस एंड इज कॉल्ड एज चलाजा. ओके, अपोजिट टू चलाजा देयर इज micropyle. So chalazal end is present towards the upper part of the और अगर आप anatropous oval की बात करें तो ये basal part को है chalazal end. ओके, और micropylar end उसके opposite है. Now let us understand how the ovule and its structure develops. The ovule arises on the placenta as a hemispherical protuberance, which grows into a projecting mass of tissue, the nucellus. The inner integument, which is usually formed first, initiates from the epidermal layer. इनर इंटेगुमेंट जो है वो बना हुआ होता है इस लेयर से जिसको बोलते हैं एपिडर्मल लेयर. ओके, And the outer integument from the subepidermal layer. उसके ठीक नीचे जो दूसरा लेयर प्रेजेंट है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज सब एपिडर्मल लेयर. सब एपिडर्मल लेयर से बनता है आउटर इंटेगुमेंट, एंड जो हमारे एपिडर्मल लेयर से उससे बनता है, उससे फॉर्म होता है इनर इंटेगुमेंट. The growth of the integument is slower than that of the inner integument. The integument soon covers the nucellus, leaving a small opening at the tip, which is nothing but the micropyle. Development of the megaspore within the ovule or megasporangium is known as Megasporogenesis. Megasporogenesis क्या है? Megasporogenesis is the formation of megasporangium. Okay, megaspores when they are getting formed. So that type of that process is called as megasporogenesis. The megaspore mother cell undergoes meiosis and forms. अभी यहाँ से जो description है, it is related with the next part of your topic जो आता है मेगास्पोर मदर सेल किस तरह से फॉर्म होते हैं. तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स. यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस जो मिडिल में प्रेजेंट होता है. और यहाँ पे 2 अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक है एक सेल और 2 सेल्स होते हैं जो साइड बाय साइड प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं हम सिनर्जिड्स, राइट. तो ये वाला जो पार्ट है ये उन्होंने नहीं बताया है. वहां पे उन्होंने सीधा हाउ द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इट अंडरगोज मियोसिस एंड हाउ इट फॉर्म्स द मेगास्पोरोजेनेसिस, ये पार्ट बताया है. सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट. ये आपको नेक्स्ट जो पार्ट है वहां पे समझ में आ जाएगा. Forms 4 haploid megaspores. Out of the 4 megaspores, only 1 is functional and the remaining 3 degenerate. मियोसिस जब होता है तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं. ओके, उनमें से 3 डीजेनरेट होते हैं जो नॉन फंक्शनल है. सिर्फ एक ही सेल यहाँ पे काम कर रहा है. ओके, The functional megaspore is the mother cell of the female gametophyte. जो फंक्शनल मेगास्पोर है यहाँ पे उसको बोलते हैं मदर सेल. ओके, मदर सेल ऑफ दिस फीमेल गैमेटोफाइट. It grows in size and forms an embryo sac. जब ये मेगास्पोर मदर सेल व्हाटएवर द सेल इज व्हिच इज रिमेनिंग, तो वो एक ही सेल है, इट ग्रोज इनसाइड दैट पार्ट जिससे बनता है एम्ब्रियो सैक. ओके, The haploid nucleus of the megaspore divides mitotically, usually forming around 8 nuclei which organize in a definite manner within the embryo sac. 3 nuclei at the micropylar end organize into an egg apparatus. 3 at the chalazial end form antipodal cells, and the remaining 2, called polar nuclei, migrate at the center of the embryo sac and fuse to form a single diploid secondary nucleus. अभी इतना आपको समझ में आया? यही वाला जो डायग्राम है वही हमने देखा बुक में. यहाँ पे हमने इन 3 सेल्स की बात की. इन सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, राइट. यहाँ पे ये जो 3 सेल्स है, ये 3 सेल्स अलग है. यहाँ पे ये डिप्लॉइड सेल है, हम समझ सकते हैं. यहाँ पे नाउ दिस इज अ सिंगल सेल बट इट कंटेन्स 2 न्यूक्लिया एंड दैट्स व्हाई इट इज डिप्लॉइड. इट इज 2n in number. ओके, The central large cell of the egg apparatus is the female gamete, which is partially surrounded by 2 lateral synergid cells. The mature gametophyte embryo sac thus has 2 polar nuclei,
3 antipodal cells, the central large cell, that is, a female gamete, and 2 synergids. Since this type of embryo sac develops from a single megaspore and has 8 nuclei, it is said to be monosporic, 8-nucleate embryo sac. अभी ये समझना बहुत ज़रूरी है, यही सब जो डिस्क्रिप्शन है यही आने वाला है जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा डेवलपमेंट का. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि एक सिंगल मेगास्पोर था, तो एक सिंगल मेगास्पोर है जिसके डिवीजन से हमको कितने सारे सेल्स मिले. देयर आर नियर अबाउट 8 cells. ओके, 3 cells to the this part, upper part of this embryo sac, 3 cells to the downward जो पार्ट था, बेसल पार्ट है वहां पे, और मिडिल का जो सेल है वो एक है बट इट कंटेन्स 2 न्यूक्लियाई. ओके, सो 1 2 3, लास्ट वाले जो लोअर पार्ट के है दीज आर 1 2 3 6, एंड जो मिडिल वाला सेल है देर आर 2 न्यूक्लियाई. सो इट इज 8 न्यूक्लिएटेड. ओके, मोनोस्पोरिक as it is developed from the single megaspore, so that's why it is monosporic, but it contains 8 nuclei or 8 nucleated cells. Okay, because of the mitosis, so it is known as monosporic 8 nucleated embryo sac. That you have to remember. A polygonal type of embryo sac. It is the most common type of embryo sac, and it is found in more than 81% of flowering plants. To conclude, we can say that the development of ovule and female gametophyte forms a crucial stage in the process of sexual reproduction in angiosperms. तो अभी इसका जो समरी है, that summary we will try to understand. ये जो मैंने आपको बताया, now this part is क्या क्या इसमें in the seed plants, that is in the angiospermic plants, the ovule is the structure that gives rise to and contains the female reproductive cells. Ovules which are born into the placenta in the ovary develop into seeds after fertilization. It was the very first point. Okay, so these points are again very important if you are writing your answer. Okay, यहाँ पे आप ovule के बारे में लिखो, मेगास्पोर के बारे में लिखो, या डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस का जितना भी पार्ट है उसके बारे में लिख रहे हो, तो ये समरी जो है इसके पॉइंट्स आप चाहे जो भी आपको पूछा है उसमें आप ये पॉइंट्स यूज कर सकते हो. ओके, the ovules have a massive parenchymatous body that is called as nucellus. It functions as megasporangium. Okay, the ovule is protected or it is enclosed by 1 or 2 protective sheaths which are known as integraments. The ovule with a single integument is known as unitegmic, and with the 2 integuments is known as bitegmic. So the integuments they completely cover the nucellus, leaving only a small opening at one end which is called as micropylar end. The ovule is attached to the placenta by a stalk which is known as funicle, and the point of attachment of the body of the ovule to the funicle is called as hilum. So the basal part of the ovule, where the nucellus, the integuments and the funicle they merge or they attach, that part is called as Chalazza. So that is Chalazzal end. So the ovule arises on the placenta as a hemispherical protuberance which grows into a projecting mass of tissue that is called as nucellus. So that's all about the summary or whatever the points that are mentioned in that. Okay, so hopefully this structure is very much clear to you. तो ये बहुत समझना ज़रूरी है as far as the cells are concerned. यही cells के बारे में ये अगर वीडियो आप अगर अच्छे से देखोगे, ये लेक्चर अगर आपने मिस नहीं किया है, तो आपको ये जितना भी नेक्स्ट पार्ट है ना, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा. बिकॉज उसमें मियोसिस होता है, उसके बाद माइटोसिस होता है, तो ये क्यों 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड है, ये सब आपको यही वाले क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट जाते हैं. सो दैट्स ऑल about today's session. Hope you are studying, so keep studying, keep preparing your notes, and this lesson is very important, so please keep preparing your notes. Okay, so that's all for today's session. Thank you.